So we started with the concept of adsorbent and adsorbate. Adsorbate is something that gets stuck to the surface of the adsorbent. ठीक है? Adsorbent कुछ भी हो सकता है. In our case, this adsorbent may be anything. This adsorbent, for the example, I have taken it to be like chalk. ठीक है? और एक example देता हूँ. Normally, तुम्ही चाबा যেতিয়া তুমি এটা জোতা কিনি লৈ আহা, okay, when you buy a shoe, you will get inside the in the box of shoe, you will get packets of something will be written. Do you know what is written? Small white packets are there. It will be written silica gel or silica. ठीक है? What this silica does, this silica is the adsorbent, and all the water vapor or all the water humidity that is inside the in the shoe case, inside the shoe box, whatever humidity is there, it takes the water and the water gets stuck to the surface of the silica gel. Here our adsorbent is the silica gel. Okay, suppose silica particles are there, and this water molecules which were inside the shoe box is now on the surface of the is getting stuck to the surface of the adsorbent. Fine. So this process of getting stuck to the surface, a process to ki hoy jonto stuck hoye ase, they are getting stuck on the surface, is known as this process of getting stuck on the surface is known as adsorption. ठीक है? The process of getting stuck to the surface is known as adsorption. Fine. If there is any question. Okay. So this, what is happening? The surface of this adsorbent is attracting the adsorbate particles on it, and it is retaining it on it. ठीक है? Fine. So this is adsorption का मतलब क्या होता है? ये adsorbate particles जब adsorbent particles के surface पे चिपक जाता है, that is the process of adsorption. Fine. Okay. And the reversible process means if I take the silica gel and I heat it, heat করলে কি হবে? এটা গোটে কেটা তো particles water হয়, they are waters. So what they will do is this water will carry the heat and they will go out, they will get out of the adsorbent. ठीक है? They will get out of the surface and they will again come to the air if I heat it. যদি মই হিট করো মানে এইটো পার্টিকল গোটেইখিনি পানির molecules কেটা it got stuck on it, right? Now if you take this particle of silica and you heat it little bit, then what happens? All these water molecules, এই গোটেইখিনি water molecules কেটা like এটা হেরি হয়ে আসলে like stuck হয়ে আসলে on the surface, चिपक गया था, surface पे चिपक गया था, तो उसका क्या होगा? It will come out of the surface, it will again go out. ये चला जाएगा, ये छोड़ देगा, सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, हवा में चला जाएगा. So that process is the opposite of adsorption. ठीक है? उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? उस प्रोसेस का नाम होता है desorption. That process is known as our desorption. What is desorption? Desorption is the opposite of adsorption. ठीक है? It is the opposite of adsorption. Fine. Desorption is nothing but the opposite of adsorption. What is adsorption? It is the phenomenon of attracting adsorbate particles on the surface of the adsorbent particle. ठीक है? And desorption is the phenomenon of releasing the adsorbate particles from the surface of the adsorbent particles.
ঠিক আছে, সো দুটা টার্ম আমি পঢ়িলো, এটা হল তোমাৰ adsorption আৰু এটা উল্টা of adsorption, that is the desorption. মন কৰিবা স্পেলিংটো অকমান বেলেগ, AD for dog, adsorption. Adsorption मतलब चिपकना. Fine. Now there is already existence of another word known as absorption, AB, absorption. ठीक है, there is an existence of absorption. So absorption क्या होता है और adsorption क्या होता है? What is absorption and what is adsorption? Correct. Absorption में क्या होता है? Suppose you take a chalk. Suppose you take a chalk. Suppose you take a piece of chalk, CHALK. ठीक है, and then you see that some particles, suppose there is, I said that if you take a chalk and put in ink, then the particles of ink, get stuck on the surface of the chalk. It does not go inside the chalk. So दो नाम मैं बता देता हूँ. This is the surface of the chalk. It whole surface of the chalk. So this is known as surface. The surface বুলি কয়. আৰু ভিতৰৰ খিনি part, inside the thing, after crossing the surface, you go inside, right? Suppose we are looking at the moon or the sun. Sunৰ আমি খালি বাহিৰৰ surface টো দেখা পাইছো. ঠিক আছে, আমি sunৰ ভিতৰত কি হৈ আছে সেইটো চোৱা নাই. So whenever sun means Surya. So this surface is there. The surface. So suppose ink has two parts. One is the dye. This is the dye which is getting stuck to the surface. And there may be water inside. This water actually goes inside the body. Okay. This water particles goes inside the body. Okay, fine. This water particles is going inside the body. Okay, this water particles is going inside the body. Fine. So this body, inside the body, is known as bulk. It is known as bulk. Fine. So ink particles are getting stuck on the surface. It is having no entry inside, but the water can go inside the chalk also. So the inside part of the chalk will become wet. So this is known as bulk. So if any liquid or gas enters inside, that is known as absorption. If it goes to the bulk, it is known as absorption. And if it is limited and if it stays only on the surface, that is known as adsorption, AD. A dye, this dye is getting stuck on the surface of the adsorbent, na? So this is known as adsorption. ADSOR, PTION. This is known as adsorption. Okay. Now this water molecule, this green color is the water molecule that has gone inside the bulb. This process is known as absorption. This process is known as absorption. Fine. The water particles which is moving inside the chalk is known as absorption. Any question, anything that you need to ask? Fine. Next. So what is adsorption versus absorption? Okay, what is adsorption versus absorption?
Adsorption মানে কি আৰু absorption মানে কি ঠিক আছে adsorption হল আমাৰ this is our surface phenomenon surface phenomenon ठीक है adsorption is our surface phenomenon and absorption is our bulk phenomenon bulk মানে বডিৰ বস্তুটো বডিৰ ভিতৰত সোমাই যায় okay that is absorption ab abs ad ads ঠিক আছে so প্ৰথমটো হল surface phenomenon আৰু secondটো হল bulk phenomenon ठीक है number 2 concentration of the material which is adsorbed okay concentration of the material is concentration of the material is more on the what on the surface concentration of the material is more on the surface whatever particles jimlak particles mane atha khai ase on the surface of the body so concentration is higher on the surface ठीक है fine next is number 2 is of this absorption concentration is same concentration is same throughout the bulk concentration is same throughout the bulk fine ठीक है bulk or bhitor guteikhini mane like it will be properly distributed whatever particles is being absorbed it is properly distributed inside okay number 3 okay adsorption ki hoy bostuto swa etia when adsorption takes place see initially when adsorption started the particles are getting attached on the surface etia surface or area exposed area jote attach koribo pare particles komi ahise na there is less space around so that more water particles can get adsorbed so what happens as the surface area reduces because of adsorption the surface area reduces so the speed of adsorption also goes down so it starts very fast and when it gets covered up then the process of adsorption becomes slow ठीक है so ठीक है number 3 adsorption it is rapid in the beginning ठीक है rapid in beginning and rate slowly decreases rapid in the beginning and the rate slowly decreases because the surface area also decreases ठीक है number 3 it occurs at uniform rate fine it occurs at uniform rate so absorption takes place uniformly it does not matter and adsorption takes place fast in the beginning but slowly the process actually goes down okay so this is our adsorption versus absorption if there is any confusion anything that you need to ask
ठीक है. Next, suppose I have taken this one particle. This is the adsorbent. Adsorbent মানে যার গাত কিবা বস্তু মানে আঠা লাগিব পাৰে, like there is a particle on which something can get stuck. ঠিক আছে. So this is the adsorbent, and this particle which is on the surface, okay, is known as the adsorbate. ठीक है. This particle came from outside. It came from outside and it got stuck to the surface. And this particle from outside went inside the body. ठीक है. So এটো কি হৈ আছে, ইয়াতে তুমি দুইটা বস্তু চাব পাৰিছা. One is this particle getting adsorbed because it is limited to the surface, adsorbed. And this particular particle which has gone inside the bulk, এটো bulkৰ ভিতৰত সোমাই গল. হা, এটো two dimensional view. এটো হল surfaceৰ ভিতৰত, এটো হল ভিতৰত সোমাই গল. Okay. So at the same time, two things takes place, that is the adsorption and then the absorption. ठीक है. Both adsorption, adsorbed and absorbed, both adsorption and absorption if takes place simultaneously, যদি adsorption और absorption एकेलगे হয়, ठीक है, अगर दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, then it is known as absorption. তেনেহলে absorption বুলি কোৱা হয়. Absorption is a process, absorption is a phenomenon when both adsorption and absorption takes place simultaneously. ठीक है. Takes place simultaneously. Both adsorption and absorption takes place simultaneously. Fine. So now we have learned quite a thing. We have learned what is adsorbent, we have learned what is absorption, what is adsorption, we know what is adsorbate. ठीक है. This particle which is on the surface, it is known as adsorbate. Fine. And the particle which is adsorbing it is known as adsorbent. ठीक है. So let us go to positive adsorption and negative adsorption. What is a positive adsorption? What is a negative adsorption? Positive adsorption माने की, negative adsorption माने की. ठीक है. কি হয় কেতিয়াবা 100% এই ওয়ার্ল্ডত একো বস্তুৱে নাই. ঠিক আছে. মানে এইটো বস্তু হল adsorbate. This is our adsorbate. So sometimes what happens, some particles are there which get stuck outside, okay, but few particles comes inside also, like absorption. মানে absorption বুলি ক'ব নোৱাৰি, because এটো কি হল, কিছুমান particle বাহিৰত থাকিলে, maximum particles are outside the surface, আৰু অকমান particle ভিতৰৰ পিনে সোমাই যায়. Okay. ठीक है. So you can see there is 3 particles which is outside, there is 2 particles which is inside. ठीक है. So কি হয়, positive adsorption মানে যেতিয়া concentration of particles, adsorbate particles, is higher on the surface and lower in the bulk. That is positive adsorption. ठीक है. So I'll write this fact. Concentration of adsorbate particle is
is more on surface, ठीक है, more on the surface relative to its concentration in the bulk, ठीक है. Concentration of adsorbent particles is more on the surface than in the bulk. এইটো adsorption বুলি কিয় কলো তোমালোকে ভাবিব পৰা adsorption কিয় কোৱা নাই because 100% একো বস্তুৱে নহয়. Okay, অকমান particles ভিতৰ পিনে সোমাই যায় and not in the entire bulk, like little bit inside it goes. ঠিক আছে, this is positive adsorption. আচ্ছা, positive adsorption থাকিলে negative adsorption ও কিবা এটা থাকিব. Okay, let's see this. Suppose there is one adsorbent, and inside what happens, this adsorbent is there and then there are particles, ठीक है, outside, and there are particles which has gone inside, same particles. Okay, particles বিলাক ধৰিলে particles সদায় আমি sphere বুলি ধৰি লওঁ, ঠিক আছে, spherical, like balls. Okay, we understand them as the balls and all this. So you can see that ইয়াতে কি হল, particles খিনি ভিতৰত সোমাই আহিলে আৰু particles খিনি বাহিৰত আছে. So concentration, somehow concentration of the particles which has gone little bit inside is more compared to the concentration of the particles which is outside. সেইটো negative adsorption বুলি কোৱা হয়. Okay, what is the negative adsorption? When the concentration of the adsorbate particles is more inside or more in the bulk compared to that in the surface. Okay, that is a case of negative adsorption. Fine. So let us write, when concentration of adsorbate particles is more in the bulk, ठीक है, when concentration of adsorbate particles is more in the bulk than on the surface. More in the bulk than on the surface. ठीक है, when concentration of adsorbate, these are the adsorbate particles. Okay, they are more on the inside part than on the outside part. That is known as negative adsorption. ठीक है, so लिख लो, लिखा नहीं. When concentration of the adsorbate particle is more in the bulk than on the surface. Fine. ठीक है, so let us understand the concept why adsorption actually takes place. Let us understand the concept why adsorption actually takes place. So for that, we'll see this is known as the mechanism of adsorption. ठीक है, mechanism of adsorption. ठीक है, now this is a body. Okay, this is any particle, like this is a piece of anything that you can think about, nickel, anything. ठीक है, so ভিতৰত কি হয়, this body is arranged of particles. This body is arranged of particles, correct? This body is arranged of particles. এটাই body কিন্তু, this is one body, this is arranged of different particles, this is arranged of particles. ठीक है, so there is so many particles which is inside, which is comprising the entire body. Fine.
Okay, so I'm just highlighting one of the particles. Suppose I'm highlighting this particle. Suppose মই এটা particle highlight কৰি দিলো, এটো adsorbate by adsorbent নহয় কিন্তু হা. This is one single body and the body is made of particles. I'm just taking one of the particle in consideration. ठीक है? So I'm just taking one of the particle in consideration. Just you can understand that this is a piece of anything. This is a piece of a particle. This is a okay. Anything. Why I'm taking the example of this? This can be a piece of glass. This can be a piece of wood. This can be a piece of anything. Okay. This can be a piece of plastic also, like this surface. Okay. This is the surface. So this surface, this is the surface, right? But this entire thing is composed of particles, right? There are so many particles which is composing this entire plastic. So that only I'm talking about. These particles, this is a two-dimensional figure. These particles, there are particles on the edges. Okay? There are particles on the edges and there are particles inside the bulk. Okay? So just my eta particle highlight koi holo. Hoy ki any particle is in equilibrium inside the bulk. Mane ki hoy, there is force of attraction from all sides. So this is attracted in this side also. This particle is attracted in this direction by other particles. It is attracted in this direction by other particles. It is attracted in this direction. This is attracted in this direction. It is attracted in this direction. This is attracted in this direction. Okay. This is attracted in this direction. There will be other particles which are pulling it. Okay, there is attraction. So this particular particle in consideration is having attraction from all the possible sides. Okay. Correct. So these are some forces. These are some forces of attraction which is acting on the orange particle. Okay, the particle under consideration. Okay. So as a result, ki hoy? So total force that is acting on the body is zero because guttei khini A2 force A2 balance korise, A2 force A2 balance korise, A2 force opposite force balance korise, A2 force opposite force balance korise. In 2 dimension we can see that. In 3 dimension there will be more forces, but at least we can understand all the forces are balanced by each other. So the net resultant force that is acting on this orange particle is zero. Okay. So particle inside the bulk, in bulk, what happens? In bulk, what happens? Net resultant force on any particle is zero. Okay. So this, because they are all balancing each other, so net resultant force is equal to zero. Fine. My force to act kori ase hetu orange particle part eto zero hobo. This will be a zero. Any question? Now another consideration is that we can take a surface particle. So there is lot of particles on the surface. So I'm just considering one of the particle from the surface. Okay? It's a surface particle logot at a problem. Ki hoy? Suppose this is a particle which is on the surface. So it is being attracted inside on all directions. There is a particle on the surface which is attracted by all in different directions, but it is not balanced. You can see that jumla taller force bilak ase heblak balance koribole upward force ekko nai, because there is, after this there is air, nothing is there. Okay. So this is, suppose this is the body of the adsorbent. All these are particles of the adsorbent only, same body particles. Okay.
সো সারফেসত থাকা মলিকিউলস কেইটা কি হয় বা এটমছৰ কেইটা কি হয়, ইহঁতৰ ওপৰত এটা ৰেচিডুৱেল ফোর্স থাকি যায়, মানে this force are acting which are not balanced by any other force because there is no particles here. Who will balance? Nobody is attracting them. Fine. So surface particles has a disbalance of force. There is a disbalance of force. Okay, I'll just write this fact. Surface particles has a residual force which is unbalanced. এটো unbalanced হয়ে থাকে। Okay, this surface particle has a residual force. Residual মানে কিবা এটা force থাকি যায় তলৰ ফালে, which is unbalanced, কোনো balance কৰিবলে নাথাকে। Okay, so there is a tension that is always there on the particles which is on the surface. So what happens, suppose যদি কোনবা বাহিৰৰ পৰা particle আহি কেনে ইয়াতে stuck হৈ যায়, suppose there is 3 particles which is coming from outside, maybe gas. Okay, it may be gas. It is coming from outside and it is getting stuck on the surface. বাহিৰৰ পৰা 3টা particle আহি কেনে ইয়াতে stuck হৈ গল। stuck হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, their forces which were residual forces will start to come into balance. ठीक है, the forces which were earlier, these were the forces na which were acting, তলৰ থাকা force কেইটা কোনো particle ওপৰত নাছিলে বুলি কোনো balance কৰা নাই এটো force। এতিয়া বাহিৰৰ পৰা কিবা 3টা particle, suppose water particles got stuck and therefore the particles which was on the surface is now balanced in all its forces. So that's why to balance the residual force on the surface, particles gets adsorbed over there. ठीक है, this is the mechanism of adsorption. ठीक है, বুঝি পাইছা? So what can be written is the downward residual force is being balanced by the particles, is balanced by the upward force produced by the adsorbent particles. ठीक है, downward into downward residual force because it like balance one asle that got balanced by the upward force of the gas particles or any particles which got stuck on the surface. Fine, this is the mechanism of adsorption. This is the mechanism of adsorption. Just to balance this residual force, the particles get stuck and this phenomenon is known as adsorption. ठीक है, ठीक है, so what I can write is this particles which get stuck on the surface balances the residual force on the balances the residual force on the surface particles, on the surface particles, and that is the on the surface particles, and that is the reason of, or that is the mechanism why adsorption takes place. ठीक है, fine. Next, adsorption can again be classified into 2 types. Adsorption जो होता है उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. Adsorption can be
classified into two types. One is the physical adsorption, one is the chemical adsorption. फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम लोग फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन, ठीक है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम लोग केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिजॉर्प्शन भी बोला जाता है, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन is known as physisorption and chemical adsorption is also known as chemisorption. Fine. So we'll write some differences based on physisorption and chemisorption. ठीक है, physisorption क्या होता है, chemical adsorption क्या होता है. Fine. तो इसमें क्या होता है, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के शरीर में जो एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स चिपकते हैं, okay, this adsorbent particles which get stuck on the surface of the adsorbent, ठीक है। ये जो particles है जो adsorbate, this particles these are getting stuck on the surface, right? ठीक है। ये particles कौन से हैं, ये particles है तुम्हारे adsorbate, ठीक है। this particles is adsorbate and this inside particle is the adsorbent. ये क्या है, इस पार्टिकल का क्या क्या आ जाता है, दिस इज नोन एज adsorbent, ठीक है। फाइन। जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल्स फोर्स, okay, the force of attraction between adsorbate and adsorbent is a weak van der Waals force, then it is known as physical adsorption, ठीक है, ठीक है। so what I'll write is adsorbate particles are held on the surface of adsorbent by van der Waals forces, by van der Waals forces, van der Waals forces, ठीक है। they are held together by van der Waals forces. This is physical adsorption. weak होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स है, एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स में एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स के साथ जो बॉन्डिंग क्रिएशन होता है, दैट इज अ वीक बॉन्डिंग, दैट इज नोन एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन, आल्सो नोन एज केमिसॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एड्सॉर्बेंट and adsorbate के बीच में जो होता है, केमिकल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस एक्ट करते हैं और केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन देम, ओके। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर formed, strong chemical bonds are actually formed. Fine. Adsorbent and adsorbate के बीच में strong chemical bonds form हो जाते हैं, okay. Next, this is about the definition. Next is nature. What is the nature, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन अगर हो गया, चिपक दे गया, तो इसको निकाला जा सकता है, जस्ट गर्म कर दो, ये निकल जाएगा, ओके। द डिसॉर्प्शन इज पॉसिबल, ठीक है। ये बॉन्ड, बिकॉज ये वैन डर वाल्स फोर्सेस से चिपका हुआ है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट,
तो इसको निकालना लाइक इन दोनों को सेपरेट करना इजी है कंपैरेटिवली. सो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. It's a reversible process and this would be a irreversible process. ठीक है, it is a irreversible process. Fine. ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, वीक बॉन्डिंग है. वीक बॉन्डिंग में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, देखो ज्यादा गर्म करोगे निकल जाएगा पार्टिकल्स, चिपक, ये जो चिपका हुआ पार्टिकल्स है ये निकल जाएगा ज्यादा गर्म करने से. ठीक है, सो क्योंकि ये बॉन्डिंग प्रोसेस जो होता है, ये बॉन्ड, कोई भी तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है. आई हैव ऑलरेडी सेड बिफोर, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये पार्टिकल्स जो चिपका हुआ है ये निकल जाएगा. ठीक है, सो फिजिकल एड्सॉर्प्शन decreases with increase in temperature, decreases with increase in temperature. ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के साथ, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, सो ये लो टेम्परेचर में होने वाला काम है. लो टेम्परेचर प्रिफर्ड, लो टेम्परेचर इज प्रिफर्ड. ठीक है, इट ऑकर्स एट लो टेम्परेचर एंड इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक होगा. ठीक है, तो ये एक वीक बॉन्डिंग है. वीक बॉन्डिंग होने के कारण इट इज नॉट टेकिंग प्लेस एट ए हाई टेम्परेचर बट एट ए लो टेम्परेचर. Whereas केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, डायरेक्टली बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट. जैसे कि आयरन का रस्टिंग हो जाना. ठीक है, आयरन रस्टिंग में क्या होता है, आयरन के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन होता है. केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है दैट आयरन डेवलप्स ए ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस. तो अगर एक बार आयरन का रस्टिंग हो गया तो उससे आयरन वापस नहीं निकल सकता. इट कैन नॉट बी ए रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, बट processes where chemical bonds are formed normally requires activation energy. कोई भी तरीके का रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का दरकार पड़ता है. दैट्स व्हाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज इट सपोर्ट्स हाई टेम्परेचर. ओके, इसको हाई टेम्परेचर में होने देना है बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है कोई भी रिएक्शन के लिए. ऑकर्स एट हाई टेम्परेचर up to a certain extent, up to a certain extent, and then decreases. and बहुत ज्यादा भी हो गया तब भी जो चिपका हुआ है वो निकल जाएगा. बहुत ज्यादा भी नहीं होने देना, but there is a optimum temperature required. Occurs at high temperature at a certain extent and then decreases regularly, and then decreases regularly. Fine, and then decreases regularly. Next, सिलेक्टिविटी. सिलेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, सिलेक्टिविटी का मतलब आयरन के ऊपर ऑक्साइड का लेयर बनना ही रस्टिंग कहता है, राइट. बट इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एनीथिंग कैन गेट स्टक, क्योंकि कोई भी चीज चिपक सकता है एक दूसरे चीज के ऊपर. वाटर ऑल्सो गेट स्टक, एनीथिंग कैन गेट स्टक ऑन द सरफेस ऑफ एन एड्सॉर्बेंट. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा कोई सिलेक्टिविटी नहीं होता कि यही पार्टिकल्स चिपकेगा, ये नहीं चिपकेगा. नथिंग इज लाइक दैट. ऑल पार्टिकल्स कैन एक्चुअली गेट स्टक. Whereas in case of chemical adsorption, selected particles only gets adsorbed, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है दोनों के बीच में. तो केमिकल रिएक्शन हर एक पार्टिकल्स के बीच में नहीं हो सकता. देयर हैज टू बी स्पेसिफिक पार्टिकल्स. ठीक है, इसलिए इसका सिलेक्टिविटी जो है ये मैटर करता है.
ठीक है. In case of physical adsorption, selectivity do not matter. No selectivity is required, or selectivity is low because not required at all. Low since why? Van der Waals forces are universal. Van der Waals forces are universal. ये एक universal force है. Fine. Since van der Waals forces are universal, and in this case, chemical adsorption के केस में क्या हो जाएगा? It is high. Why it is high? Since why it is high? Selectivity is high because it is not possible that the compound, the adsorbent, can create chemical bond with everyone. Okay. So since it depends on, since it depends on chemical nature. Since it depends upon chemical nature. ठीक है, ये हाई होता है, ये लो होता है. Since it depends upon chemical nature. Fine. Next, layers. मतलब layers का मतलब क्या होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जैसे कि एक पार्टिकल है, दिस इज द एड्सॉर्बेंट, इसके ऊपर अगर लाइक एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल चिपकता है, इसके ऊपर अगर एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल चिपकता है तो उसका एक ही लेयर चिपकेगा या उससे ज्यादा चिपकेगा. दैट इज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. ओके, सो इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर. एक लेयर चिपक गया, इसके ऊपर दूसरा लेयर आ सकता है. ओके, मल्टीपल लेयर्स फॉर्मेशन इज पॉसिबल. ठीक है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा के ऊपर तीसरा लेयर. हाँ, द इफेक्ट विल डिक्रीज बट it is like that only. Okay, multi molecular layer possible. ठीक है, इसका मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स चिपक सकता है. ठीक है, इसका मल्टी मॉलिकुलर लेयर चिपक सकता है. इन केस ऑफ in case of your chemical adsorption, what will happen? The layers formed is on the unimolecular layer. एक ही molecular layer create होता है. Okay, unimolecular layer is created. Unimolecular layer is created. Fine, unimolecular layer का creation हो जाता है. I hope you are understanding this part. Okay, there should not be any confusion. If you have, you can ask. ठीक है, ठीक है, फाइन. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? ज्यादा प्रेशर होगा इसके ऊपर, देखो ये पार्टिकल्स है, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये और ज्यादा चिपकेगा. राइट, एटलीस्ट इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन दैट इज पॉसिबल. ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज directly proportional to physisorption या physical adsorption. ठीक है, तो प्रेशर जितना लगाओगे उतना ज्यादा फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा. ठीक है, इन केस ऑफ, ओके, effect of pressure is directly proportional to the physical adsorption. Higher the pressure will be applied, more will the physical adsorption. ठीक है, and in case of chemical adsorption what will happen? It usually decreases as the pressure increases. Okay, usually decreases as pressure increases. Usually decreases as pressure increases. Fine.
ठीक है, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो पार्टिकल्स जो है वो भी लाइक इट हैज टू हैव ए ऑप्टिमम प्रेशर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होना है, राइट? सो समथिंग लाइक दैट. सो दिस आर द डिफरेंट इफेक्ट्स. इट स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन. इट इज नेचर, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होने से डिसऑप्शन हो सकता है. देन सिलेक्टिविटी, लो हाई, ठीक है, लेयर्स, मल्टीमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, एंड एट लास्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है. One important thing is, I'll just write it down here. जो गैस इजीली लिक्विफाइबल होते हैं, इजीली liquefiable gases are easily adsorbed physically. Okay, physics option उन लोग का easily हो जाता है. जो easily liquefiable gas होते हैं उनके लिए physics option. ठीक है. easily liquefiable gases are easily adsorbed. तो कैसे करके आइडेंटिफाई होते हैं कि कौन इजिली लिक्विफाइबल है, कौन इजिली लिक्विफाइबल नहीं है? ओके, सो द वे टू डिटरमाइन इज इजीली लिक्विफाइबल गैस, मतलब जो बहुत इजीली लिक्विड बन जाए गैस से. इजिली लिक्विफाइबल गैस हैज वेरी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज है? इट इज द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied. Easily liquefiable gas has very high critical temperature. Fine. So we have understood that there are two categories of gases. One is easily liquefiable and one is the non-easily liquefiable gases. Fine. Okay, good enough. Now let us take an example. Physical adsorption and chemical adsorption दोनों का example इसमें दिखेगा. ये तुम्हारा एक normal reaction है that we have taken from organic chemistry. This is known as the hydrogenation. Hydrogenation. This is the addition reaction. सबको पता है. To convert alkene into alkene. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? You can see that there is nickel. ठीक है. एक सरफेस होता है निकल का. This is the surface of nickel. Okay, this is the surface of nickel. This is the surface of nickel. ठीक है. अब क्या होता है इस पे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज लाइक टू हाइड्रोजन एटम्स टुगेदर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड. दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज H2 एंड दिस निकल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो है निकल. तो निकल के सरफेस के तरफ this H2 molecules gets attracted. This gets attracted to the surface of the nickel catalyst. ठीक है ऐसा? This hydrogen molecules gets attracted to the surface of the nickel catalyst. Since it gets attracted, ये तो वस्तु attract हो जाए कारण to की. This hydrogen molecules gets attracted on the surface of the nickel catalyst due to some kind of weak van der Waals forces. Due to weak van der Waals forces. Due to weak van der Waals forces. ठीक है. Van der Waals, due to weak van der Waals forces. Due to weak van der Waals forces. ठीक है. There's a H2 molecule which is getting stuck to the surface of the nickel.
Why? Due to weak van der Waals forces. ठीक है. Now when it comes very close, then what happens? There is a separation of this hydrogen molecule. ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सेपरेट हो जाता है, and this hydrogen atom now creates a bond with the nickel. This each hydrogen atom now creates a bond with the nickel. ठीक है. So due to weak van der Waals forces, it got attracted towards the nickel. But when it came closer to nickel, then we can see that hydrogen atom ये breakdown हो गया, H2 molecules में breakdown हो गया, and this each hydrogen atom created a bond with the nickel. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे chemisoption. ठीक है, chemisoption. एक बार तो ये हाइड्रोजन चिपक गया. Now this hydrogen, मेरा पर्पस क्या था? निकल पे आके चिपक गया. अब मेरे को फर्दर कैसे करेंगे? Like how can I make CH2 double bond? CH2 double bond को CH3 single bond CH3 में कैसे बदले? Because already the hydrogen atom got stuck. ठीक है? So since the hydrogen atoms got stuck to the nickel, now we need to release the hydrogen atom. इसको desorption करना जरूरी है. For that purpose, we need to heat it. इसको heat करेंगे. Heat करने से क्या होगा? ये जो bonds है between hydrogen and nickel, this will get broken. ये hydrogen atoms will break down, and this will attack the carbon having a double bond. When you heat it, this so when you heat it, what happens? This bond between hydrogen atom and the nickel gets broken, and this hydrogen is now running towards the carbon to break the pi bond, and this will create a CH3 single bond CH3. Because ये दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन से अटैक करते हैं ना, दिस टू हाइड्रोजन अटैक्स फ्रॉम द सेम लोअर डायरेक्शन. ठीक है, अल्टीमेटली हाइड्रोजन वाज अ गैस, ये तो उड़ के कहीं से आ गया, निकल पे थोड़ा अट्रैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस. नाउ दिस हाइड्रोजन एटम is going to break the double bond between carbon and carbon, and it is going to create a bond between them. तो इस bonding को हम लोग क्या बोलेंगे? This hydrogen atom is bonded with carbon. ठीक है, fine. This hydrogen atom is actually getting bonded with the carbon. This kind of addition of hydrogen to the double bonded carbon is known as syn addition. Syn addition. Syn addition मतलब same direction से add कर देना. ठीक है, it is known as syn addition of hydrogen atoms. Fine. Sanchari, are you understanding? Sanchari? Yes, sir. Okay. ठीक है. So this hydrogen atom is getting attached to the carbon, which is having double bond. So ultimately, this is one kind of example of chemisoption. Chemisoption होता कैसे है उसका example. Fine. ठीक है. Next is a topic known as enthalpy of adsorption. ठीक है, तो adsorption ने हम लोग को देखा कि we have seen that during adsorption some kind of chemical bond is produced between किसके बीच में? adsorbent और adsorbate के बीच में बॉन्डिंग क्रिएशन हो गया था. दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्रिएशन हो जाता है. ठीक है, तो अगर बॉन्डिंग क्रिएशन हो रहा है, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, बॉन्ड मेकिंग हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक हुआ कारण है दिस इज हीट इवॉल्व, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व. ठीक है, when 1 mole of an adsorbate is adsorbed on the surface of the adsorbent. okay, adsorbent क्या होता है? इसके ऊपर
एड्सॉर्बेट चिपकता है, ठीक है। तो अगर 1 मोल एड्सॉर्बेट चिपक जाए एड्सॉर्बेंट के ऊपर, तो हीट जितना निकलेगा बाहर की तरफ, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। गुड एनफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो डेल्टा एच होगा, द डेल्टा एच of adsorption is going to be negative. Delta H of adsorption, that is the heat release during adsorption, is negative. Fine. The heat release during adsorption is going to be negative. ठीक है, क्योंकि ये एक बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है, सो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट। नाउ सी, बिकॉज इट्स ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट्स ए नेगेटिव फॉर एड्सॉर्प्शन, ठीक है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस हो, ये एक एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का रीजन क्या? बॉन्ड मेक, बॉन्ड को बनाना। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। बॉन्ड मेकिंग कर देना, इसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है, ठीक है। बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। डेल्टा एस इज, व्हाट इज डेल्टा एस? इट इज चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, एस का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी। डेल्टा का मतलब चेंज, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, ठीक है, डिसऑर्डरनेस। नाउ सी वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट राइट, जस्ट सी फर्स्ट, ओके। सपोज देयर इज ए प्लेट, देयर इज ए प्लेट, ठीक है। इस प्लेट में आके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ए गैस, इट इज फ्लाइंग हियर एंड देयर, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर उधर उड़ रहा है, इट इज कमिंग, इट इज फ्लाइंग हियर एंड देयर, so it is having some disorderness because it's a gas. Now this hydrogen molecule comes and it gets stuck to the surface, it gets stuck to the surface of the nickel catalyst, ठीक है। ये निकल कैटलिस्ट है, ये हाइड्रोजन गेट स्टक, स्टक मतलब इसका मूवमेंट बंद। सो पहले ये उड़ रहा था, इट वाज हैविंग ए हायर एंट्रोपी इनिशियली, इनिशियली आई का, दिस इज आई एस आई, मतलब इनिशियल एंट्रोपी इज हाई, ठीक है। एंड दिस इज हाइड्रोजन चिपक गया, तो इसका फाइनल एंट्रोपी हो जाएगा लो। इनिशियल एंट्रोपी एंड फाइनल एंट्रोपी, ठीक है। इनिशियल एंट्रोपी एंड फाइनल एंट्रोपी। सो इनिशियल एंट्रोपी हो गया हाई एंड फाइनल एंट्रोपी हो गया लो, ठीक है। तो इनिशियल एंट्रोपी हाई हो गया, फाइनल एंट्रोपी लो हो गया, क्योंकि ये आके चिपक गया, अभी ये मूवमेंट नहीं कर सकता है, इसका तो और कहीं मूवमेंट, कहीं हिलने उलने का चांस नहीं है, तो डिसऑर्डर होने का चांस नहीं है। सपोज एक बच्चा है जो बहुत ही भागा दौड़ी कर रहा है एंड ए स्ट्रिक्ट टीचर एंटर्स द क्लास एंड द चाइल्ड कैन नॉट मूव एनीवेयर एनीमोर, ही इज सिटिंग इन वन प्लेस। सो व्हाट हैपेंस, हिज डिसऑर्डरनेस डिक्रीजेस, हिज रैंडमनेस डिक्रीजेस, ही बिकम्स मोर ऑर्डर्ड, ठीक है। तो अगर इनिशियली एस एफ मतलब फाइनल एंट्रोपी इज लोअर देन इनिशियल एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, सो अल्टीमेटली डेल्टा एस विल बी, अल्टीमेटली डेल्टा एस विल बी नेगेटिव, फाइन। अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज फाइनली जो एंट्रोपी था वो इनिशियल एंट्रोपी से कम है, final entropy is lesser than the initial entropy, fine। delta S is
So delta S is particularly negative. Delta S is negative. Fine. So यहाँ पे देखने को मिला that delta H जो है वो negative है. Delta S is also negative for gas molecules being adsorbed. तो एक बार वो चिपक जाता है, गैस मॉलिक्यूल चिपक जाता है तो उसका उड़ना बंद, फिनिश्ड. सो उसका जो एंट्रोपी होता है वो कम हो जाता है. सो इट इज डिक्रीजिंग, इट इज नेगेटिव. बोथ आर नेगेटिव. ठीक है. तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज सीखा हुआ था, दैट फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये तो हम लोग नहीं करते ना, खुद से होता है. फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है, डेल्टा जी मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी. जी का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी. इसका गिव्स फ्री एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. गिव्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव. ठीक है. तो ये गिव्स फ्री एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. अल्टीमेटली नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है. दिस इज योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी. गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर इसको नेगेटिव होना है देन यू कैन सी दैट डेल्टा एच तो नेगेटिव ही है. टी डेल्टा एस, टी इज पॉजिटिव, टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट. नाउ यू मे से सर टी टेम्परेचर तो नेगेटिव होता है. नो, दिस टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट का मतलब केल्विन स्केल में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता. एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल. ठीक है. Okay, there is no temperature which is negative. You may say minus 4 degrees Celsius. No, I'm not talking about degrees Celsius. I'm talking about Kelvin. So delta H minus T delta S. ठीक है. डेल्टा एस तो नेगेटिव आ गया, ये तो नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया. यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू पॉजिटिव, डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एस का वैल्यू क्या था, नेगेटिव. सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा. सो ये वाला एंटायरली पॉजिटिव हो जाएगा. टी डेल्टा एस विल बी, टी डेल्टा एस एस नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू दिस नेगेटिव इज बिकमिंग पॉजिटिव. सो अल्टीमेटली डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होना पड़ेगा, एंड इट हैज टू बी नेगेटिव आल्सो. डेल्टा एच हैज टू बी नेगेटिव and the possible value of delta H should be greater than T delta S. Fine. The possible value of delta H should be greater. Otherwise, how it will be negative? It cannot be negative. ठीक है. Fine. ठीक है. So this is the condition. So enthalpy should be, lot of energy should come out so that it is greater than T delta as well. So for spontaneous process, this is the condition. This is what is taught in this particular topic. ठीक है. एक exception है. There is one exception. So again, I'm repeating, delta H is negative, delta S is negative because वो चिपक जाता है आके. So delta G should also be negative for a spontaneous process. मतलब जो natural processes होते हैं, all are spontaneous in nature. So delta H should be greater than T delta S. ठीक है. There is one exception, that is of hydrogen gas adsorption on glass. If hydrogen gas is adsorbed on glass, ठीक है, हाइड्रोजन गैस अगर ग्लास में आके चिपक जाता है, ठीक है, सो दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. वो जो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें डेल्टा एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है. ओके, द वैल्यू इज पॉजिटिव ओवर देयर. फाइन. Next, today's class topic, factors affecting. Okay, so we have seen the role of gas free energy thermodynamics के हिसाब से. Factors affecting adsorption of gases on solids. Solids जो हो गया वो बन जाएगा adsorbent, and gases जो हो जाएंगे that is adsorbate.
ठीक है, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, ठीक है। So how does adsorbent and adsorbate, what are the possibility, what are the explanations factors? जो गैस का सॉलिड पे चिपकना, ओके, एक सॉलिड है उस पे गैस चिपक जाता है, इट हैपेंस, वी हैव सीन इन केस ऑफ कंडेंसेशन, वाटर वेपर क्या हो जाता है, ग्लास के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। सो नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। सो इजिली लिक्विफाइबल जो गैसेस होते हैं, इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर more easily adsorbed, are more easily adsorbed, or easily liquefiable gases are more easily adsorbed. easily liquefiable gases का पहचान क्या होता है? easily liquefiable gases are more easily adsorbed. How to identify easily liquefiable gases? They have higher critical temperature. Okay, this easily liquefiable gases have higher critical temperature, higher critical temperature. Fine. Then comes nature of adsorbent. Nature of adsorbent. What is the nature of the adsorbent? ठीक है? So, how is the adsorbent? कैसा है? Like charcoal. You know charcoal, activated charcoal. Or this today's they gave the ad of toothpaste. Na? It contains activated charcoal. They contain salt. करता क्या है salt या activated charcoal? The impurities that is present in the cavity or the teeth or in the mouth, okay, they are considered to be the adsorbate, and this activated charcoal or salt are like the adsorbent. ये जाता है मुंह के अंदर जो गंदगी रहता है, the dirt that is there inside the mouth, it gets stuck on the surface of the salt or activated charcoal, ठीक है। As a result, they get adsorbed. तो ये activated charcoal क्या होता है? मतलब ये जो surface है, now you see how much space is available for adsorption. Only this much space is available. ये खाली space available है adsorption के लिए. For adsorption, this much space is only available. Now, if you clean this entire surface by some method, then the efficiency of this activated charcoal or activated salt increases. Then it can again adsorb more and more adsorbate. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. So the extent of adsorption of a gas, the extent of adsorption of a gas, the extent of adsorption of a gas depends upon the nature of adsorbent. Depends upon the nature of adsorbent. ठीक है. Next, specific area of the adsorbent. जितना ज्यादा area उतना ज्यादा adsorbent बैठने का जगह. Okay, so see, if there is more area, more adsorbent can be accommodated. ठीक है. So directly proportional, higher the area, more will be the adsorption. ठीक है, higher the area, more will be the adsorption. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो सकता है. ठीक है. So suppose you are frying a potato को डायरेक्टली पोटैटो को अगर डाल दिया ऑयल में, तो उसका जो लेवल का फ्राई होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन ओनली, ऑयल गेटिंग स्टक टू द सर्फेस ऑफ द पोटैटो. अगर पोटैटो को काट के रखे, then the surface area, exposed surface area increases. तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस को ऑयल में लगा सकते हैं, right? So it is directly proportional. The higher the surface area, more will be the adsorption.
ठीक है. At last, this 2 points are there. Effect of temperature. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो दो प्रोसेस होता है. एड्सॉर्बेट अगर एड्सॉर्बेंट पे चिपक जाता है, ओके, इफ द एड्सॉर्बेट, ओके, इज stuck to the adsorbed on adsorbent, ठीक है, अगर एड्सॉर्बेंट पे चिपकता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज, this process is known as what? This process is known as adsorbate is adsorbed on the adsorbate is adsorbed on the adsorbent. ठीक है. This process is known as condensation. Condensation जैसे कि ग्लास में वाटर वेपर चिपक जाना, that is condensation. ठीक है ना. You see, you take a cold glass of water, उसके सरफेस पे क्या होता है, बाहर का जो वाटर वेपर होता है एयर में, वो भी चिपक जाते हैं. Next is adsorbate is adsorbed on the adsorbent. Next is adsorbate is released from adsorbent. ठीक है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन. एक हो गया, एक होगा, एक को रिलीज करना है, एक को तो कंडेंसेशन हो गया, दूसरा को क्या करना है, रिलीज. वी हैव टू रिलीज, दैट इज वेपोराइजेशन. वी कैन से इट वेपोराइजेशन. तो तुम लोग बताओ कि कहां से कौन सा प्रोसेस लो टेम्परेचर सपोर्ट करता है, कौन सा प्रोसेस हाई टेम्परेचर. एड्सॉर्बेंट वाला प्रोसेस, कंडेंसेशन वाला प्रोसेस में कंडेंसेशन इज सपोर्टेड एट लोअर टेम्परेचर एंड वेपोराइजेशन is supported at higher temperature, correct? तो adsorption जो प्रोसेस है, adsorbate is adsorbed, ये जो प्रोसेस है that is nothing but adsorption. Adsorption is favorable at lower temperature. ठीक है. Adsorption is favorable at lower temperature and desorption, release का मतलब क्या होता है, desorption. Desorption जो होता है that is favorable at higher temperature. That's all. Fine. ठीक है. तो टेम्परेचर जितना कम हो उतना ज्यादा चिपकेगा. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर तो हम लोगों ने बता लिया ऑलरेडी. प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, एटलीस्ट फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है. फाइन. ठीक है. तो एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज करना एड्सॉर्बेंट का. ओके, टू इंक्रीज द अवेलेबल सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द अवेलेबल सरफेस एरिया. तो ये इंक्रीज कैसे होगा, टू इंक्रीज द अवेलेबल सरफेस एरिया, ये इंक्रीज कैसे होगा. नंबर 1, मैकेनिकल रबिंग. थोड़ा घिस देने से भी साफ हो जाता है, मैकेनिकल रबिंग. ठीक है. So if you increase the surface area, you can just rub the surface and it will become shiny. It will become ready to adsorb. ठीक है. Number 2, by finely powdering it. Okay. Fine powdering it. तो जितना ज्यादा टुकड़ों में बांटेगा तुम एड्सॉर्बेंट को, उतना ज्यादा वो चिपक, like more adsorbate can be stuck on it. ठीक है. Fine. Next is number 3 is okay, by strongly heating it. Strongly अगर हीट कर दो तब भी जाके एक्टिवेट हो जाता है. Strongly हीट करने से डिसॉर्प्शन बढ़ता है. As a result, it becomes activated. Activated means to increase the available surface area for adsorption. ठीक है. So these are the topic that we have done today. Tomorrow we'll do colloids
And tomorrow nahi, day after tomorrow, we'll do colloids and we'll try to finish that part. Okay. So whatever we have done today, I hope you have made the notes. If you have not made the notes, I don't know what you're doing. So usko अच्छे से पढ़ो. Let's see. Day after tomorrow, we'll complete it. Thank you, everyone. Thank you, sir.